Dot is what I like to call as a better journalism company. Academic या professional tags जो होते हैं, they open up many doors for you. बिजनेस माइंडसेट से सोचना कैसे है कोई भी आइडिया को. What was the one most important learning from your experience in BCG? Excel आ रहा है. Culture, BCG. BCG, pressure. It's a Pressure. high pressure environment. Investors. No go, TV news channels. circus, Journalism. fundamental need. Hello, everyone, and welcome to another episode of the Creators Podcast, where we explore dreams, stories, and success. And today we have Anugrah Agnihotri with us, who is XLRI 2022 graduate. He has worked in BCG for 2.5 years and is founder, or as I call it, creator of Dot, which provides news that's simple and significant like a dot. एंड मुझे आपके बारे में सबसे सरप्राइजिंग चीज ये लगी थी कि यू डोंट हैव एनी बैकग्राउंड इन मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म, एंड स्टिल इन जस्ट 6 months ऑफ डॉट की एग्जिस्टेंस में यू हैव मोर देन 10,000 रजिस्टर्ड यूजर्स. दैट्स रियली इम्प्रेसिव, ब्रो. सो हम इस कॉन्वर्सेशन में, आज की कॉन्वर्सेशन में यही अनकवर करेंगे कि what was your journey with Dot, before Dot as well, and anyone in the audience who is 22 to 26 year old, if he or she wants to start his or her entrepreneurial journey, कुछ उनको खुद का क्रिएट करना है, तो वो आपकी जर्नी से क्या वैल्यू ले सकता है, क्या इंसाइट्स ले सकता है सकती है, all from the positives and negatives from your journey. So let's hear from you. Tell us what is Dot and what led to the creation of Dot. Thanks, Ankit. Thank you for having me here, and thanks for that wonderful introduction. Yeah, Dot is what I like to call as a better journalism company. And like you mentioned, we are still young in the journey. अभी 6 महीने हुए हैं, and we like to think of ourselves as a very small baby company. But what we are trying to fix is very simple. We are trying to make news less misleading, confusing, boring for everyone. That is a simple problem that we are trying to fix. And the way we fix it is very simple. We come up with one high quality story every day across a range of topics, which could be politics, policies, world ke bare mein, business, economy, sports, culture, anything and everything, as long as it is relevant to you. Uske bare mein we come up with a story that is around 5 minutes long. You can read it or you can listen to the audio narration of it. And we explain it in a way which is very friendly. It would almost feel like you're having a coffee conversation with a friend. And in that story, we try to break down things at a level at which you understand. So even if you do not have any background context around it, let's say आपको पता नहीं अभी रशिया और यूक्रेन में क्या चल रहा है, और you have no idea कि RBI के रेपो रेट कट का क्या मतलब होता है. We'll break it down to a level where you understand those things in simple terms. And if you do understand those things पहले से ही, for you, there will be some deeper insight for you to take away from that story. So that is what we are trying to do. कॉम्प्लेक्स टॉपिक को चंक्स ऑफ नॉलेज में मेरे को सर्व किया जा रहा है के हिसाब से. Exactly. So we are trying to demystify things that traditionally people don't like reading. कि वन इनसाइट दैट आई गॉट इवन बिफोर स्टार्टिंग डॉट वाज कि यार न्यूज तो एकदम दलदल है, बहुत गंदगी हो चुकी है, या इट इज टू मेसी फॉर मी टू इवन टच, स्पेशली अराउंड पॉलिटिक्स. And these are all smart folks that I'm talking about, people who were my ex-colleagues at BCG or my batchmates at XLRI. But even those folks were very averse to news. उनको लगता है क्या पॉलिटिक्स पढ़ के क्या समझ में आएगा, क्या जियो पॉलिटिक्स हो रही है, डज नॉट मैटर टू मी, व्हेन इन फैक्ट इट इज ट्रूली वेरी रेलेवेंट फॉर देम. उनको लगता है बचपन से कभी नहीं पढ़ा, मुझे आइडिया नहीं, अब तो ट्रेन आगे छूट गई. सो दे स्टिक विथ थिंग्स दैट दे आर मोर कंफर्टेबल विथ, कि यार बॉलीवुड गॉसिप पढ़ लेते हैं, क्रिकेट की न्यूज देख लेते हैं, स्टफ लाइक दैट. So I wanted to change that thinking. So it had to be a very fundamental shift in habit. And to do that, you had to bring it down to a level where people resonate with it. उनको इतना friendly लगे that they start looking forward to your stories every day. That is what we are trying to achieve. बट ये आइडिया आया कहाँ से, मतलब व्हाई इनटू जर्नलिज्म और इनटू न्यूज एंड मीडिया इंडस्ट्री, हाउ डॉट केम इनटू प्लेस?
दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई गेट क्वाइट ऑफन बिकॉज जैसे आपने बोला मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं है इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन नहीं किया, कभी न्यूज़ हम्म प्लेटफॉर्म के साथ काम नहीं किया. So the reason why I started it is because I saw it as a very fundamental thing that was lacking in my own life. मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो मैं खुद उससे जूझ रहा था रोज. And seeing that not being adequately met by anybody else, I mean, all the offerings that are out there in the market, they were not solving the problem fully for me. So I wanted to take a plunge into trying to fix it. Uh, and मतलब from one thing that I realized very quickly on is कि यार most of these professions are just gatekeeping होती है, which गेट means कीपिंग is मतलब? gatekeeping मतलब कि बाहर वालों को रोका जा रहा है उसको unnecessarily complicated करके. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लॉयर हो तो दे विल ऐसे ऐसे कुछ क्लॉजेस बता देंगे, आपको लगे कि ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज करें, इट इज नॉट फॉर मी टू टच. या डॉक्टर आपको बोलेगा कि हार्ट अटैक हो रहा है, दिल कॉल इट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, आपको लगे कि क्या कॉम्प्लेक्स सी चीज है. सेम थिंग फॉर जर्नलिस्ट, आपको फ्रॉम द आउटसाइड आपको लगे कितनी मुश्किल चीज होती है, इतना रिसर्च है, ये है वो है, व्हेन इन फैक्ट इट इज नॉट द ट्रूथ. मोस्ट थिंग्स आर नॉट रॉकेट साइंस. And journalism is something that is so important that it should not be kept only to journalists. I would ideally want to see more and more smart folks, people like us जो engineering करते हैं, MBA करते हैं, doctors बनते हैं, they should also try their hand at journalism because frankly it is a very fundamental need for us to understand कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, trying to make sense of our surroundings and the world that we live in. So it is हम्म too important a job to be left only to journalists. And frankly, my lack of experience in journalism is more like a superpower for me. I never saw it as a handicap. Uh, हाउ? Unfortunately or fortunately, अभी जो मेन स्ट्रीम मीडिया या जर्नलिस्ट की इमेज बन चुकी है, इट इज इन अ वेरी सॉरी स्टेट. हम्म मतलब दे डू नॉट इंस्पायर ट्रस्ट. द मोमेंट आई से कि यार स्पेशली ये तो स्पेशल इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो हुआ सबने देखा, ट्रस्ट बिल्कुल एवरीबडी. फैक्टर काफी लूज हुआ है इन मेन स्ट्रीम मीडिया या जर्नलिज्म से. बिल्कुल बिल्कुल. एंड फ्रैंकली इट इज नॉट जस्ट मेन स्ट्रीम मीडिया यार, इवन जो न्यू एज सोशल मीडिया पे आए हैं, दे आर जस्ट सर्विंग ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल. मतलब आपने हम्म इंडिया पाकिस्तान वाला बोला, दैट और मे बी द एयर इंडिया प्लेन क्रैश दैट टुक प्लेस रिसेंटली, दे मेक इट अ सर्कस, मतलब दे मेक अ मॉकरी आउट ऑफ इट, when in fact they should be telling you stuff like statistically airplane is like the safest mode of transportation, or talking about Boeing का क्या culture हो चुका है because of which they have had so many crashes in the past, or maybe even talking about technical aspects of कि यार fuselage क्या होता है, black box क्या होता है. They will not talk about stuff like that. They will हम्म pick up the low hanging fruit, which is playing with emotions of the readers or the viewers, कि यार फियर कैसे पैदा कर ले कि अगली बार ये बंदा फ्लाइट में नहीं बैठा. हाँ, हम्म फियर मॉन्गरिंग बहुत करते हैं या एकदम बहुत इमोशनल स्टोरी चला देंगे, जो विक्टिम्स है उनकी फोटोज सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे विदाउट एनी कंसेंट ऑफ प्राइवेसी और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो मेन स्ट्रीम मीडिया एंड इवन द न्यू एज मीडिया प्लेटफॉर्म्स, दे आर वेरी क्विकली लूजिंग ट्रस्ट. तो ट्रस्ट इतना जल्दी इरोड हो रहा है, विच इज अ वेरी राइट प्लेस फॉर मी एज एन आउटसाइडर टू कम इन एंड ट्राई टू डू थिंग्स डिफरेंटली. दे डू स्टफ जो एक न्यूज मेकर के पर्सपेक्टिव से होता है, जो उन्होंने अपने स्कूल में सीखा या प्रोफेशन में सीखा. आई डू थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ न्यूज कंज्यूमर बिकॉज आई हैव नो अदर पर्सपेक्टिव. Me as a consumer, what do I want? I want them to respect my intelligence, to tell me things how they are, to show all perspectives, to say things in a very friendly way, even if I don't have any background, I understand it. हम्म Right? So this is the ethics and the principles with which Dot was built. जस्ट वन क्वेश्चन दैट comes to my mind कि एंड बीइंग फ्रॉम एमबीए या बी स्कूल कि बीसीजी हर एक का या एमबीबी कंसल्टिंग हर एक का एक ड्रीम जॉब होता है. कोई भी स्कूल में आता है वो एक गोल एटलीस्ट एक गोल लेकर आता है कि यार एमबीबी क्रैक करेंगे, विल गो इनटू द टॉप कंसल्टिंग फर्म्स एंड गेट दोस फैंसी टैग एंड इन रिटर्न यू विल आल्सो गेट फैट पे चेक्स एंड लॉट ऑफ ब्रांड वैल्यू. बट माय क्वेश्चन टू यू इज एंड नाउ यू आर इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड, डू दीज टैग्स या जो एक्सपीरियंस है बीसीजी का, डज इट हेल्प व्हेन यू आर वेंचरिंग इनटू एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप वर्ल्ड? इफ यस, हाउ? It does help, Ankit. The quick and easy answer is it does help.
ऑल दीज टैग्स आपके academic या प्रोफेशनल टैग्स जो होते हैं, दे ओपन अप many doors for you. I would be lying if I say कि यार it does not matter, degree does not matter, or your CV does not matter. Uh, so BCG for me has helped me in many ways. One of which is कि यार एक तो सेफ्टी नेट आपके पास एक आ जाता है. There's a Hmm. fallback option. Even if you fail in your entrepreneurship endeavor, you know कि यार it will be easy for you to find your feet again. आपको कोई और company very gladly they'll absorb you. Or maybe BCG or some other company would be happy to take you back again. So it helps in that way. Uh, but that is just one superficial side of it. The bigger aspect is it teaches you skills that, frankly, no theory or no classroom could teach you. Okay. Let me give you a few examples of those skills. One is BCG or MBB or some other top consulting firms, they change the way in which you think. So the way you think about thinking itself changes. एक चीज होती है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, विच बेसिकली मीन्स कि आप किसी भी प्रॉब्लम को एकदम उसके एलिमेंटल जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसमें आप ब्रेक डाउन करो टू द पॉइंट वेर यू हैव रीच्ड एटॉमिक ट्रुथ्स एंड देन यू स्टार्ट मूविंग upwards from there. So that is something that we have carried forward at Dot also. And a lot of users who love Dot's way of writing will relate to this कि अगर कोई भी टॉपिक होता है we break it down, we move backwards. So what करके हम पीछे जाते हैं to the point where everybody is on the same page. जैसे हम आरबीआई रेपो रेट्स के बारे में अगर लिखते हैं, ट्रेडिशनल मीडिया विल जस्ट रिपोर्ट कि आरबीआई हैज स्लैश्ड रेपो रेट्स बाय 2%. इट विल लीड टू हायर इन्फ्लेशन एंड मे बी हायर जीडीपी ग्रोथ, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. बट टू एन एवरीडे पर्सन दे विल थिंक यार ये रेपो रेट होता क्या है. Right? And for those who understand, repo rate is basically the rate at which banks borrow money from RBI. A second question will come up कि यार हम बैंक से पैसा मांगते हैं, ये बैंक्स को क्यों पैसे मांगने की जरूरत पड़ती है, Hmm. आरबीआई फिर इनको पैसे देता भी क्यों है. राइट, देन यू विल अनकवर मोर ट्रूथ्स कि बैंक रन क्या होता है, कि अगर सब लोग एक साथ पैसा मांगने चल जाए बैंक के पास पैसे नहीं होंगे. राइट, Right. तो जस्ट अ एग्जांपल टू explain what first principle thinking is. Hmm. And the quick and easy way for any news reporter is कि बस superficial jargon heavy headline बना दो and move away from it. The more difficult job is to explain things in a very fundamental and basic nuanced way, which is what we try to do. So this is one thing that BCG taught me. The other thing that they taught me is how to become a generalist. बिकॉज उससे पहले जो मेरा पाथ था विच वॉज NIT इलाहाबाद में इंजीनियरिंग की, उसके बाद आई वॉज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर सिट्रिक्स. आई वॉज इन अ साइलो, मतलब इंजीनियरिंग के तरीके से मैं हर प्रॉब्लम को देखता था या IT के नज़रिए से देखता था. बट वेन आई मूव टू BCG आई वॉज it was very uncomfortable at first, to be honest. You are thrown into the deep end of the swimming pool and then you are taught कि खुद से सीखो, swimming सीख जाओ. But it helped me become a generalist because I was forced to take on projects across a range of domains. So I did a project which was on the social sector. It was with a private university. Then I did something with a cement manufacturer. I consulted a government in the Middle East. I did something with a bank in Mumbai. And if you'll see, all of these are domains which do not come naturally to me. I've not been trained in them. ये काफी But डाइवर्स है. बहुत डाइवर्स एंड इट हम्म. इज बैक ब्रेकिंग वर्क. मतलब बहुत मुश्किल है. आपको ओवरनाइट दे आर आस्किंग यू टू अब्सॉर्ब डोमेन नॉलेज लाइक अ स्पंज and then speak to folks who are 20-30 years elder to you in that domain. Not just speak, you're advising them कि आप गलत करो, ऐसे होना चाहिए. हम्म. And it has to be backed by very solid research and data. So that helped me become a generalist, and that translates into a job of an entrepreneur. उसमें यार आपको फिर यू हैव टू डॉन मेनी हैट्स. यू कैन नॉट जस्ट से कि मेरे को ये कंफर्टेबल, आई जस्ट स्टिक टू इट. So while it was easy for me to create apps and website for Dot, and maybe even researching and writing for Dot, there were few areas जो were very difficult for me. I have not been a designer, तो मुझे UX समझना पड़ा. I had to start making infographics. मुझे legal stuff नहीं समझ में आता था, but I had to incorporate Dot. मुझे finance नहीं समझ में आता, but I have to have a balance sheet to keep हम्म. track of where we are heading. Right? So, Makes so that sense. so that background in consulting helped me. You are from NIT, then move to XLRI, then move to BCG. So एक देखा जाए आइडियल कैंडिडेट के लिए ये ड्रीम करियर पाथ है कि यहाँ से यहाँ देन एवरीथिंग एट द
क्रेमे डाला क्रेमे सर्व हो रहा है. सो व्हेन डिड यू डिसाइड टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ कि यार बीसीजी से अब खुद का एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज एनीवन इन द ऑडियंस जो अपना खुद का स्टार्ट करना चाहता है, हाउ विल ही और शी डिसाइड कि ओके नाउ इज द राइट टाइम टू डू दैट. एंड मतलब इट सरप्राइजेस मेनी पीपल कि आप अच्छे जॉब कर रहे थे, व्हाई डिड यू चूज समथिंग मोर रिस्की. वन वे ऑफ लुकिंग एट इट इज जैसे मैस्लोज नीड हायरार्की लॉ होता है. इट इज जस्ट अ पिरामिड की सबसे बेसिक नीड्स आपके रोटी कपड़ा मकान एक बार फुलफिल हो गया, देन यू आर लुकिंग फॉर प्रेस्टीज, यू आर लुकिंग फॉर, यू आर गोइंग एट द टॉप ऑफ द पिरामिड. आई थिंक देर इज समथिंग सिमिलर फॉर करियर एंड वर्क ऑल्सो, कि यू स्टार्ट ऑफ कि यार मुझे बस एक अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा पैकेज लग जाए, 20-25 लाख घर में आने लगे, दैट इज योर फर्स्ट एम. Then when you go climb a bit higher in the hierarchy, you will realize no, that is not what I want. पैसा तो चलो एक बात है, but I need more prestige. I need to do stuff that gives me more visibility. So maybe you take on more riskier projects in the same domain, in the same company. You start working harder. फिर आप एक लेवल और ऊपर जाते हो, फिर आपको लगता है दिस वर्क इज नॉट फुलफिलिंग फॉर मी, मे बी दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट पैशनेट अबाउट. कि चलो अच्छा है, मैं किसी सीमेंट मैन्युफैक्चरर की प्रॉफिट 10x कर रहा हूँ, इट इज गुड फॉर दैट पर्सन, बट अल्टीमेटली इज इट फुलफिलिंग फॉर मी. इट वॉज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की सब जो बड़े जार्गन्स यूज करते हम्म. हैं साइकोलॉजिस्ट. तो बट इट एक्चुअली मीन्स समथिंग इन द रियल वर्ल्ड. अल्टीमेटली आपको लगेगा व्हेन यू आर स्पेंडिंग 50% ऑफ योर waking hours doing something, you might as well do something that it counts. आप चाहते हो कि मैं ऐसा कुछ काम करूं जिससे मैं जाना जाऊं देश दुनिया में, एंड ऑल्सो डू समथिंग दैट यू फील क्रिएट्स अ वेरी टैंजेबल वैल्यू फॉर द सोसाइटी. एंड ऑल दिस ऑफ कोर्स कम्स व्हेन योर बेस इज बिल्ट, की अच्छी एजुकेशन थी, अच्छा जॉब ऑलरेडी था, Hmm. फाइनेंशियल एसेट्स थे मेरे पास. ओनली देन व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सच बिग क्वेश्चंस कि यार मैं ऐसी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं जिससे समाज का भला हो जाए, जिससे मैं बहुत फुलफिल्ड हूं कि यार मैं 12 घंटे मैंने दिन में काम किया, बट आई डिड समथिंग दैट इज हेल्पिंग मी स्लीप वेल. So I had reached that point in life, honestly, where I realized the work that I'm doing is not very fulfilling for me. It is Okay. not helping me as much as I would like it to. Of course, स्किल बिल्डिंग के लिए है, पैसे के लिए जैसे आपने बोला, इट सेट्स यू अप फॉर अ वेरी नाइस करियर, बहुत पैसे मिलते हैं, बहुत फेम है, ग्लैमरस लाइफ, ऑल दैट इज देयर. बट इट रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई वाज disillusioned by all of it. And this journalism space was something that had been bothering me for decades. मतलब frankly 15 साल से मैं सोच चुका था कि this is a very fundamental need which is not being met, और बहुत future में it is just only going to get worse with social media and AI. So I had reached that point where the regret of not taking the plunge was way higher than the grief of trying and failing, और जो भी setback career में आता. So when I weighed both these options, I realized कि चलो I will live with the grief कि चलो उसने try किया, fail हो गया, but I will not be able to live with the regret कि I was in a comfortable position in life where I could have taken this risk, but I did not. तो वो Hmm. बुढ़ापे में मुझे वो रिस्क वो रिग्रेट नहीं चाहिए था. सो दैट इज व्हाई आई रीच दैट पॉइंट. एंड ऑफ कोर्स देयर आर मोर लॉजिस्टिकल रीजंस टू इट, कि माय वाइफ सलोनी was able to help both of us out financially. फैमिली में ऐसा कुछ बर्डन नहीं था, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वी had just been married, तो किड्स नहीं थे. So stuff like this also, many other things fell into place, but the fundamental reason why I took that plunge is because वो रिग्रेट नहीं चाहिए थी मेरे को लाइफ में. Hmm. And I think being an MBA, you explained it very with the typical framework mindset की Maslow needs. वहां से you'll get to know कि हाँ when the base needs are met, then you move above the ladder. Great man, and good to hear from you as well. Ki what was your thing or your point when you took that plunge? So thanks for sharing it. Moving on, I would like to know कि आइडियाज सबके पास होते हैं. मेरे पास भी बहुत आइडियाज आते हैं पॉडकास्ट को लेके या और भी कुछ, अगर कुछ खुद का स्टार्ट करना है इवन इन जॉब. बट द थिंग इज which is the most challenging is how to convert that idea into a business case, or basically making money or having commercial viability of that idea. So tell us, how have you done that with Dot, which you were talking about previously as well, कि business model क्या है Dot का, and
और बिजनेस माइंडसेट से सोचना कैसे है कोई भी आइडिया को, विच कैन अगेन हेल्प एनीवन इन द ऑडियंस लुकिंग टू स्टार्ट समथिंग ऑफ देयर ओन. Got it. अंकित, चल टेक सम टाइम, ये थोड़ा लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है. या डायरेक्टली बिजनेस मॉडल में जंप करना तो फिर बहुत ही, आई वुड से इट इज ऑलमोस्ट अ फुलिश थिंग कि इट इज लाइक पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स वाली बात हो गई. द फर्स्ट थिंग दैट यू when you're thinking of a startup is you think of the problem, जिसको white space बोलते हैं in a more jargony way. And then you don't start looking for white spaces in industries or in a domain. You start by looking at white spaces in your own life. You start looking at problems जो आपको daily life में affect कर रही है. Which could be anything. मतलब for me, of course, it was news, जैसे मैंने बताया. But it could be something as small कि आप सुबह उठते हो, आप ब्रश करने जाते हो. You don't like the process of brushing. You feel आपके पता नहीं ब्रिसल्स बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं टूथब्रश के. It is too time taking. Whatever it is. So you start with a problem जो आपको लगती है कि it is a very big problem that is worth solving. Then you look at the solutions. First, you of course look at what is the existing solution in the market. Maybe somebody else is already doing what you had in mind. Then there is perhaps no merit in pursuing that path who you already kar raha hai. But if you believe ki you have something different to offer to the world, which is an innovation of some sorts, which could also be price ki main itna low price kar dunga, that in itself is an innovation, or you're doing something very fundamentally different with the use of technology or your business model or something. So you start building on your problem, you start looking for ways to solve that issue. Then is the third step where you look at the business viability, जो आपके क्वेश्चन था. Are there enough people in the world who are facing the same problem? कि आपको जो ब्रश के साथ प्रॉब्लम थी, is it only you or is it like lakhs and lakhs or potentially crores of people in the world and in India who are facing that problem? Yes. If yes, then are they ready to pay for it? If they say no, we are not ready to pay for it, then there is no point. तो अल्टीमेटली यू बिल्ड ऑन इट स्टेप बाय स्टेप. यू रीच अ पॉइंट जब आप समझते हो कि यार हाँ ये प्रॉब्लम है, ये इसका सोल्यूशन है, ये इसका टारगेट ऑडियंस है, एंड यस दिस इज द बिजनेस मॉडल, this is how I will get money. So even if they are not ready to pay, maybe sponsors are paying, somebody is paying for it. There is some business model which will keep it sustainable. So for Dot, it was very clear that there are many ways in which media companies earn money, and chief of which is advertisements. Yes. But we were very clear कि it is a very fundamental disagreement that I have कि अगर कोई और पे करता है for news versus the person who is reading that news, तो there are bound to be conflicts. And as a journalist, you will be forced to prioritize the interest of the person who is paying versus the person who is consuming your news. Because ultimately, जो पे करेगा आप उसी के ही अधीन हो जाओगे. That is how things are. So we do not want to be in that position. So we were very clear कि जो पे करता है, जो कंज्यूम करता है, वही पे करेगा. And we looked at many ways यार कितना चार्ज करना चाहिए. Again, we were very clear कि we want कि सब लोग पढ़े, ज्यादा लोग पढ़े Dot. So it had to be priced at a very affordable price point. For now, it is 59 rupees per month. At a point where only. So at a point where the user feels कि मैं जितना पैसे दे रहा हूँ मुझे उससे काफी ज्यादा वैल्यू इन रिटर्न मिल रहा है, which is the Indian mindset कि वैल्यू फॉर मनी मिले. It becomes very undeniable for that person कि मैं पे करना स्टार्ट करूँ. And this is what happened with Dot. It was a very big gamble that we took. And many people questioned me that nobody pays for news, nobody pays for information online, and nobody pays for digital subscriptions in India. कि यार सब नेटफ्लिक्स अकाउंट भी शेयर करके यूज करते हैं, स्पॉटिफाई चिल्ला चिल्ला कर एड्स दिखाता है, nobody pays for it. But it was a very big gamble that I had to take, and I like to call Dot as an experiment. So we were very clear कि we will not fudge the results of this experiment by showing कि यार इतने लोग sponsors हो गए, इतने views हो गए, nothing of that sort. If it fails, it fails, but we will do it the right way, at least the way which I feel is the right way to do it. Thankfully, it was very heartening that we found hundreds and hundreds of people who now pay for Dot. And many of them, Ankit, they are paying for a digital subscription for the first time in their life. So for the initial few customers, I in fact got on calls with them and I guided them कि यार Apple के iTunes में ऐसे पैसे डाल करके you pay for stuff, because they had never done anything of that sort in their life. Which was a very big validation for us. जैसे it is a very big lesson for any entrepreneur. Do not chase people who just like you or like your product. Find those people who love you. Like, it is better to find 100 folks who love your product than thousands who just like your product. That is one lesson that I found very early on in my journey. तो यार मतलब सोशल मीडिया इज अ वेरी बिग मिराज जो आपको इल्यूजन देगा कि 100 के पीपल लाइक योर और
saw your view or viewed your reel, which is a very big mirage कि यार इतने सारे लोग, millions of people are viewing your reel. आपको लगे कि you have made it in life. But when you dig deeper, when you ask uncomfortable questions like, yeah, will these people come back to my reel tomorrow? Did they actually get some value from it? Are they ready to pay for it? Then you will understand that maybe this is not the right solution. And इट्स अ then वेरी you वेरी वैलिड पॉइंट। बिकॉज मैंने खुद भी सोशल मीडिया इंडस्ट्री काफी अच्छे से देखी है hmm, इन माय स्टिंट इन टाटा मोटर्स, एंड अभी भी जब मैं पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ, तो नंबर्स, स्पेशली व्यू नंबर्स, दे डोंट टेल द रियल स्टोरी। बिकॉज अल्टीमेटली इफ यू वांट टू कन्वर्ट दैट ऑडियंस हु आर व्यूइंग योर रील या आपकी वीडियो देख रहे हैं, उसको अगर आप कम्युनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो, वो कम्युनिटी जो आपके साथ रहे, चाहे आप आपका करियर या आपका कंटेंट क्वालिटी बीच में डाउन भी हो, बट दैट कम्युनिटी दैट स्टेज विद यू, दैट इज द रियल चैलेंज इन सोशल मीडिया। तो इट्स वेरी वैलिड पॉइंट कि सोशल मीडिया इज अ absolutely. मिराज, द नंबर्स आर मिराज। Absolutely. I या agree. In fact, Ankit, इसमें एक और चीज है. So at least for news and journalism, I was very clear कि we need to have our own platform. Of course, we are present on Instagram, LinkedIn, elsewhere, but all our stories are on our own app and website. Now, there are two reasons why we did it. First is social media का जो game है, we do not want to play it. And because you are an expert in that industry, you understand कि once you enter social media, you have to follow certain rules of the algorithm. Everything that you do is designed to uh, get more views, get more clicks, go viral, and there is certain algorithmic constraints that you have to follow. इट For सेड दैट news, if you can't respect the platform won't respect you। it won't. Absolutely, very well said. यही होता है. So even when I see new age platforms, news के जो आते हैं social media पे, even if they start with very good intentions, they fall into that uh, रूल्स ऑफ द एल्गोरिथम वाला गेम इन विच दे आर क्लिक बेटी हेडलाइन होना ही चाहिए. थोड़ा स्क्रीम करो, थोड़ा एनिमेशन जान मुझसे एक्स्ट्रा डालो, लेटेस्ट जो ट्रेंड है मोमेंट मार्केटिंग हो रही है, वो दे स्टार्ट डूइंग ऑल ऑफ इट. They have to succumb to it because the platform will not respect you. They will move on to somebody who is doing that. इट्स अ प्लेबुक फॉर सोशल मीडिया। वहां पर इफ यू वांट टू एक्सेल, तो यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स। मतलब मैं भी उसमें रील्स में करता हूँ ये सब, एनिमेशन डाल Hmm. दिया कि हाउ टू, या यूट्यूब का थंबनेल या यूट्यूब की टैगलाइन क्या कहाँ से कैची ला सकते हैं कि या यूजर रिटेंशन इंक्रीज हो राइट इन द स्टार्ट, जो हुक होती है। Hmm. बट इट्स अ प्ले बुक सोशल मीडिया पे। इफ यू वांट टू गो विद दैट गेम कि हाँ, मैं मेरे को क्वांटिटी चाहिए, नंबर्स चाहिए पहले स्टार्टिंग में, कि हाँ इतने व्यूज आए, ये मेरी ऑडियंस है या ये मेरा सब्सक्राइबर बेस है, देन यू Hmm. हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स Yes. एज पर द But once you एल्गोरिथम। start doing it, then there is no going back. हाँ, You might say कि मैं वो शुरू में कर रहा हूँ so that I get viewers, बाद में मैं अच्छा कर दूंगा content, but that never happens. Because you realize this is a game which is very fun to play and it will get you money. You once you get viewership, once you get those eyeballs, it will translate into ad money. But for news and journalism, this is not what is in the best interest of our readers and viewers. They do not want sensationalism. They do not want bias, propaganda, shouting, noise. नहीं चाहिए यार. They want the news platforms to respect their intelligence, which is very difficult to do while you are on social media. Social media is great for advertising. It is not that I'm against social media, and we also use it for advertising, but we keep it only till that. After that, we say you have to come to a safe space which is managed by us, जहाँ पर कोई algorithm नहीं है. We are not playing a game, which is our website and app. वहाँ पर आप आओ. Right? And of course, makes there is a sense। second reason to it also कि these algorithms, they have their own, I mean these social media platforms, they have their oन whims and fancies. कभी आपका कंटेंट निकाल देंगे फॉर वट एवर रीजन, उनको लगेगा कि फ्रीडम नहीं रहती है. या दैट इज कंट्रोल ऑल्सो किसी और के हाथ में एटलीस्ट। कंट्रोल किसी और के हाथ में. सो वी टुक दैट डिसीजन क्वाइट अर्ली ऑन. एंड बूटस्ट्रैप रखना था, दैट वाज राइट फ्रॉम द स्टार्ट कि वी वोंट be using money or taking money from any of the investors. That was Yes. clear from the start, right? Yes. In fact, Ankit, even before starting, we have laid down some principles for Dot, जो कि हमारे ऐप और वेबसाइट पे very clearly upfront mentioned है, so that users understand what we are doing. One of which is कि we will never take ad money, and we have also mentioned that we are not going to raise money at all. Investor pressure अपने को नहीं चाहिए, या फिर इन्वेस्टर का कुछ बायस या प्रोपेगेंडा भी नहीं चाहिए. Day one से we are bootstrapped, and we believe that our fundamentals are so strong that it is good enough for us. So day one से we are bootstrapped, and day one से we are making money, we are profitable, and all of that money is being reinvested back into growing our company.
That's inspiring. If you want to share some numbers. Sure. So numbers here, we are close to 10K, 10,000 registered users. So we don't look at numbers like कितने लोग viewers आए. Those are way more, 20x ज़्यादा होंगे, but we don't even like to track those misleading numbers. So people who have actually signed up on our website, our app, and they have read our news, that is 10K, out of which almost 10% are those who become our paying users. They start subscribing to us, Okay. which I think is a very decent number for this industry. And out of those people who start subscribing, almost 90% or 90% plus actually are retained. They continue month on month, which is Okay. definitely above industry average. So basically, people who join us, they do believe in this idea so strongly that they're ready to be with us month on month. Hmm. And it's really, I would say, inspiring, and because you have done all this in just 6 months of the launch of Dot. So, and I hope and I wish कि as you go with time और लोग आपके साथ जुड़े, because आपका vision is very clear कि unbiased news and presented in simple chunky manner कि हाँ easy to understandable digestible format हो. And so Thanks. I wish you luck on that. Thank you. Thank you so much for sharing all these numbers as well. And now moving on, हम बात कर रहे थे जर्नलिज्म या न्यूज एंड मीडिया इंडस्ट्री के बारे में. Actually, you know journalism space quite well, and I want to have some insights on journalism and news consumption behavior from you. Interest काफी रहा इस space में, although I'm not into this space as a whole, but थोड़े से few some of my friends are there who are into online journalism, and I have two questions for you. I'll ask one by one. My first question is, with attention span declining, how do you compete with platforms which offer news in just 60 words? And I'm talking about in shorts as an example here. Sure. So frankly, I don't think of that company as our competition. I don't. We like to compete with what I would say are more established journalism companies, which are more into long form reading. So maybe the Ken, FinShots is a big example. I love their Hmm. work. Morning Context, Planner. So these are the kind of journalism platforms that we would aspire to be like, not in shorts, because again they are playing a very different game. I very, very strongly believe that you cannot compress any news into 80 word nuggets or a 60-second reel and say that you have explained things. It is, frankly, it is a very dangerous thing that they are doing because they are hiding more than what they are revealing. अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर यू स्पेंड 10 minutes a day of scrolling through, I don't know, 10 odd stories, how many of those stories did you actually understand in depth? And But you even if will you only under get to know about what is happening. You will not get the in depth of any topic. ट्रू ट्रू दे आपको कुछ हर चीज सुपरफिशियल है उसमें. यू वोंट अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स हैपेंड. अभी जैसे व्हाट इज हैपनिंग इन द न्यूज इज लाइक इजराइल और ईरान की लड़ाई चल रही है. नाउ दे जस्ट टेल यू इन वेरी शॉर्ट वर्ड्स कि ईरान और इजराइल में लड़ाई हो रही है, इजराइल ने अटैक किया, एंड इट हैज समथिंग टू डू विद यूरेनियम एनरिचमेंट, इट हैज समथिंग टू डू विद न्यूक्लियर bombs. Now, a very fundamental question that arises in all our heads is कि यार, फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट फोक्स विल नॉट इवन नो इराक ईरान इसराइल कहाँ है मैप पे. दे वुड से कि ये तीनों कंट्रीज एक ही है ना. व्हेन इन फैक्ट दे आर बेस्ड ऑन वेरी डिफरेंट theology, you have very Hmm. different principles, right? Then you would think about, why do some countries have nuclear uh, weapons, why do others not have? You'll understand कि NPT होती है, कुछ non proliferation treaty Hmm. होती है. Then there is an Iran nuclear deal that was done under Barack Obama. So there are so many layers to anything. अगर आपको सिर्फ superficial information मिली, तो you will form your opinion very quickly without even understanding the facts, which is a very dangerous game. And in today's world of very quick consumption, snackable consumption, people are going for quantity over quality. एट द एंड Hmm. ऑफ इट आपको बहुत चीजें पता तो रहेंगी, बट वो बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पर पता रहेगी, एंड ऑफन इट इज मिसलीडिंग. इट इज बेटर कि आप न्यूज पढ़ो ही मत, अगर इफ दिस इज हाउ यू वांट टू But कंज्यूम इट.
isn't it going against the tide कि अगर आजकल ट्रेंड शॉर्ट फॉर्म स्नैकेबल कंटेंट का है तो इवन इवन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ मेरा अटेंशन स्पेन भी इतना नहीं है कि यार मैं पूरा लेट्स से न्यूज़पेपर का पूरा आर्टिकल पढूं which is True, let's say 3 screens long if we talk about scrollability. true. I just want to be with I know वो superficial होगा but Hmm. अगर trend ही यही है then how are you competing against that? So what we do is we understand attention की problem है. So we are not very dense or very academic कि आपको 10-10 15-15 मिनट पढ़ना है. Ultimately all we require is आप दिन के 5 मिनट डॉट को दो, Hmm. which is way less than what you give on other platforms if you go by the numbers. अगर आप दिन में बस एक चीज आपको पढ़नी है वो आप डॉट पे पढ़ो 5 मिनट्स में एंड देन मूव ऑन टू समथिंग एल्स versus in shorts or some other platform where you are spending 10-15 minutes, which is 3x of what you are spending on dot. Spending it. So purely in terms of numbers and number game, dot is in that sweet spot jahan par it is not too dense and academic where we are demanding too much of your attention, neither is it too superficial or finicky or fickle कि यार आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा हम बता रहे हैं. So we have tried to have that balance. The other thing is, by design we give only one article a day, one story a day. ऐसा नहीं कि हम आपको 10 चीजें एक दिन में बता देंगे and then you are inundated with a lot of data and information. Because frankly, there are hardly 4 or 5 things that happen in a week in the world that are worth your undivided attention. एवरीथिंग एल्स इज जस्ट वेरी ऊपर ऊपर से कि यार विराट अनुष्का का ये हो गया, क्रिकेट में हो रहा, ऑल दैट ठीक है, यू कैन कीप इट एट द बैक ऑफ योर माइंड, बट देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ in a very friendly way, which dot does, for which we will require your attention. Now it is Only up to one story us. per day. So it is one story per day. Now it is up to us कि हम किस तरीके से लिखें उस स्टोरी को, that way we are able to grab your attention from start to finish. एंड यू विल ड्रॉप ऑफ ओनली व्हेन यू फील कि ये यार फालतू की चीज इसने बता दी या इसने जो बताया मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है. सो दैट इज व्हेन योर अटेंशन वेन्स. सो द ओनस लाइज ऑन अस टू keep you hooked from start to finish. And I think we are doing a fairly good job at that, because that is what our numbers and analytics tell us. People who love us, they really love us, and we actually hear feedback कि यार आपने सिर्फ एक स्टोरी क्यों लिखी. They tell us कि we are longing for that one story. My day starts by having chai and reading dot story or listening to dot story while I'm commuting. What's the time when a story comes? It comes at 5:30 a.m. We have set it like Okay. that, but most folks read it around 8 to 9 a.m. or late at night before going to sleep. This is what Okay. data suggests. Interesting. So yeah, मतलब attention retain करने का it's a very good way which you have countered कि we will present in-depth knowledge but in again simple chunks में where user will be hooked to the to know more rather than Yes. only getting the superficial knowledge about that बिल्कुल. particular story. And we have a lot of infographics sprinkled throughout the apps, तो थोड़ा Yes, उससे break absolutely. भी आ जाता है, and it is more easier to understand some हाँ. things. That's great. That's really great. My second question is that on the same lines, how do you compete with news which is being offered only on social media? अब इसमें I'll talk about there are some individual creators as well जो खुद का चैनल है या खुद का इंस्टाग्राम पेज है and they are as an infotainment channel or page they are giving information on a particular topic. It might be कि superficial हो simple facts हो but वहां पर is my observation you correct me if I'm right or wrong here कि it is highly opinionated. बिकॉज एज एन इंडिविजुअल मेरा खुद का बायस रहेगा जब भी मैं कोई न्यूज प्रेजेंट करूंगा. तो अगेन सोशल मीडिया जैसे मैं खुद भी हैवी सोशल मीडिया यूज करता हूँ एंड अगेन इट्स गोइंग विद द ट्रेंड कि सोशल मीडिया को आप कैसे काउंटर कर रहे हो. तो आपने जो अभी एग्जांपल्स दिए, आई एम गेसिंग यू आर टॉकिंग अबाउट यूट्यूबर्स, ध्रुव राठी, Yes. मोहक मंगल, stuff like हाँ, that, and also YouTubers, Fade D'Souza or some Instagrammers, Instagrammers, stuff like that. yes. So for them, I like to think कि वो तो यार एक पर्सनालिटी बेस्ड ब्रांड है, इट इज नॉट अ कंपनी, एंड दे आर डूइंग अ गुड जॉब, प्लीज डोंट मिस्टेक मी हियर. मैं समझता हूँ कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर जेन्युइनली ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन द वे दे सी फिट, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर अ पर्सनालिटी लेड ब्रांड है. They are not a company, which means they do not have, I would say, principles नहीं है, they do not have a business model, and कल को वो नहीं रहेंगे तो nobody else will be able to take over from them. For me, for Dot,
Dot is different from Anugrah. So Anugrah has his own opinions and biases based on how he grew up. But Right. when I'm working for Dot, I'm a servant of Dot in many ways. मतलब I will be forced to do things the way Dot envisages it to be कि यार ये प्रिंसिपल के साथ करना है तो वैसे ही करना है. तो आई विल हैव टू कीप माई बाइसेस असाइड. मेरा कुछ पर्सनल ब्रांड नहीं जा रहा. So the Hmm. person who is reading has to always get an unbiased or something that includes all perspectives, in spite of the writer, Anugrah, or somebody else having their own personal agendas and opinions. So this is a मतलब very डॉट का fundamental व्यू है. difference. सॉरी. डॉट का कोई व्यू नहीं है, मतलब डॉट के प्रिंसिपल्स हैं उसके हिसाब से वो बताएगा. तो इट विल मतलब शो यू ऑल rather than personal views, वहां पर डॉट एज अ डॉट इंफॉर्मेशन सर्व की जा रही है rather than अनुग्रह सर्विंग द इंफॉर्मेशन. एग्जैक्टली. एंड फ्रैंकली यू विल नॉट इवन रियलाइज कि किसने लिखा है, मैंने लिखा है या किसी और ने लिखा है. इट विल देयर विल बी वन कॉमन वॉइस दैट कम्स आउट, एंड दिस इज हाउ कंपनीज ऑपरेट. आपको फर्क पड़ता है कि आपकी ट्रेन कौन चला रहा है. एनीबडी कैन बी रनिंग इट, बट जो बंदा चला रहा है वो इंडियन रेलवे से ट्रेनिंग लेकर के आए, इट डज नॉट मैटर. दैट पर्सन इज रिप्लेसेबल, राइट. सेम फॉर डॉट. कल को मैं ना रहूं, डॉट के प्रिंसिपल्स, द वे ऑफ थिंकिंग, आर टेक स्टैक, आर बिजनेस मॉडल, एवरीथिंग टुगेदर रिमेन्स. दैट इज डॉट. It is not me. So my opinions mean nothing. I might be the founder, but it really means nothing. I am the servant to the way Dot thinks journalism should be. That is how it is. थैंक So, थैंक यू so फॉर that is a शेयरिंग very इट बिकॉज fundamental difference. थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दैट पॉइंट. इनफैक्ट मैं एक और पॉइंट डीप में जाना चाहूंगा. इफ यू टॉक अबाउट individual creators, again what I have observed is कि when they become big, traditional media, yeah, to some extent government forces also, they try to suppress or stop that creator who has become big, uh, because again, as you mentioned, काफी strong opinionated उनका view होता है किसी भी story पे. So I want to know your opinion, and the reason I'm asking you is because you are into journalism and media industry, and anyone who is looking to start something in the same industry, this can be a very big barrier to entry. कि यहाँ पर ये सब हो रहा है. So have you, again, two questions coming out of it. Have you seen anything of that sort happening with you? And second, how to tackle this if this happens at some point in time? यार जो आपने बोला अंकित, तो आई बिलीव बहुत बड़ा डिटरेंट है फॉर दिस स्पेस. एंड फ्रैंकली इट इज ऑल्सो डिटरेंट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स फॉर दैट मैटर. कि लोगों को लगता है यार कल को कुछ हो जाएगा. Hmm. Similarly for journalism. Now, dot is in a space जिसको हम explanatory journalism बोलते हैं. We explain things in a very Hmm. simple way और हम हर side दिखाते हैं. So even if first of all we don't accuse people, we don't talk about personalities at all. That is not a style. We'll talk about Mhm. politics. It will be backed by data, and even when we are accusing, we will keep it a bit light and fun. It is by design. It is not that वो पर्सन बुरा नहीं कर रहा है तो हम कॉल आउट नहीं कर रहे हैं. वी फील द रीडर्स आर इंटेलिजेंट इनफ टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड दे अंडरस्टैंड क्या इंसिनुएट क्या हो रहा है यहाँ पे. दे अंडरस्टैंड, दे आर स्मार्ट इनफ फॉर इट. बट देर इज अनदर फील्ड ऑफ जर्नलिज्म जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता है, जिसमें जो आपने प्रॉब्लम्स बोले डेफिनेटली होता है. बिकॉज थोड़ा सा मड स्लिंगिंग होता है, आप खोद के कुछ क्लेम करते हो. यू आर द फर्स्ट वन टू क्रैक द केस. तो आप यू आर द फर्स्ट वन जिसके ऊपर वो रॉड भी गिरने वाली है. यू आर द फर्स्ट वन हु विल बेयर दैट ब्रंट. We are not in that zone, so we are safe. Thankfully we have never received that feedback कि आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी इंडिविजुअल या किसी कंपनी के को आपने अटैक किया. बिकॉज यू डोंट डू इट, because we are not into investigative journalism, and also because that is not our tone. We don't accuse. Hmm. It is for you to form your own opinions. Dot will never leave you with either rage or fear or anything. We will leave you with awe. Even when we talk about war, we are not talking about the grim realities or the casualties or anything of that sort. We are going deeper. We are talking about the history of it or stuff like that. Why it So, happened? yes, why it happened without taking Hmm. any sides. Because we have no agenda. मेरा भी एजेंडा नहीं है, कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई एडवर्टाइजर नहीं है, कोई इन्वेस्टर नहीं है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो वी आर रिलेटिवली क्लीन फ्रॉम दोज एक्यूजेशंस. बट आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स, एंड आई नो आप किसकी बात कर रहे हो यूट्यूब पर. दे फेस दिस इशू. इट हैज हैपेंड क्वाइट रिसेंटली. So one way is they fall in line with what the government or जो भी the big people want them to do.
They will start pandering to them, उनके favor में बोलने लगेंगे. But it isn't defeating the purpose of journalism in the first place, which is a Makes very sense. sorry state to be in here. I कि don't have any ओपिनियन दे रहे हो answers तुम to how they स्टार्टिंग में can rather solve than it. explaining to it. हाँ हाँ. And it is not because Hmm. they know कि वो गलत कर रहे हैं, but हाँ. they fear for their own livelihood यार. Ultimately उनको भी Hmm. घर चलाना है. Hmm. कोर्ट I कचहरी के think चक्कर किसी को नहीं काटना. it is again coming back to the point कि social media पर you look for sponsors या eyeballs and then you do, I don't know, to some extent maybe this can also influence. True. Why would you write or talk about any company which is your Hmm. prospective sponsor in the future? Why would you want to upset them? Makes sense. कि नाउ इस पॉडकास्ट में एक और हम चीज करते हैं कि यू हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट बिग कॉर्पोरेट्स ऑफ द वर्ल्ड. आई एम ऑल्सो वर्किंग इन कॉर्पोरेट एंड नाउ यू आर इन टू योर ओन entrepreneurial journey. So we'll try to bring the learnings out of the corporate world which you have applied in the entrepreneurial journey. So since you have experience in BCG, what was the one most important learning from your experience in BCG that you have incorporated while creating Dot that again anyone in the audience or I can take away while creating something of their own? Sure. Okay. Few of them are skills that we have already talked about, Hmm. stuff like being a generalist or first principle thinking. But frankly, I think the biggest takeaway for me from my stint at BCG was belief. It gives you a lot of confidence when it puts you in rooms with CXOs or with very big companies. It gives you a lot of belief कि यार मैं भी कर सकता हूँ. अदरवाइज आपको लगता है कि यार मैं आउटसाइडर हूँ, वो लोग बड़े लोग पता नहीं क्या बात करते होंगे, क्या करते होंगे. वंस यू आर इन दैट रूम यू रियलाइज दैट frankly they are also just humans like you and me. They Hmm. have their own insecurities, they have their own fears. So that belief carried forward into Dot कि यार मैं भी कर सकता हूँ. Journalism is not a big space कि it is like a no go for me, I cannot crack it. It gives you the belief कि no problem is too big to solve. Hmm. And that belief comes only when you have been in the trenches. जब आप वैसा काम कर चुके हो, ऐसे किसी को बोलने से नहीं होता कि यार कॉन्फिडेंस में रहो, हो सब हो जाएगा. Hmm. Only once you have been in that room when you realize कि यार 10 मिनट के प्रिपरेशन से भी you can go to a minister or a CXO, उनके सामने प्रेजेंट कर सकते हो. That is a very very big validation and boost for you. That Hmm. belief कि यार कुछ भी किया जा सकता है. No thing in life is that big कि ये नहीं किया जा सकता. It is a very big mental block which goes away the moment you experience something of this sort. But of course there are Hmm. very hard skills that you learn कि Excel बहुत अच्छे से सिखा दिया, डिजाइनिंग सिखा दी, PPT बनाना. All that is very easy to learn on your own. आजकल इतने सारे free resources है. Yes. But the biggest skill is to understand big picture क्या है. घबराओ नहीं यार, मतलब don't be flustered when you see कि from the outside कि यार ये इतनी बड़ी कंपनी हो गई, इसको 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स मिल गए, मैं तो बहुत छोटा सा, I'm a small fish in this pond, how can I do it? That Hmm. self confidence will come when you realize what you know and what you do not know. That in itself will give you a lot of clarity कि मेरे को यहाँ नहीं जाना, I don't know this, मेरे को ये करना है, this is my strength. I think that belief is the biggest takeaway for me. Thank you so much for sharing this and I can truly resonate with it कि belief at least belief होना चाहिए कि start करते हैं या I can do it and then उसके बाद you learn as you go and hard skills so as you said कि we can learn बहुत सारे resources है YouTube courses हैं बहुत कुछ है but ये चीजें जो है काफी experience से आएंगी but you have to start with the belief कि yes you can do it. And thank you so much for sharing this Anugrah. And after all these heavy talks, there is one section that we do. It's called the Creators Connect, where I'll ask you 7 words, and it's a rapid fire where you will have to answer instantaneously कि क्या आ रहा है दिमाग में इस word को सुन के. Sure, So we'll start. sure. So first one, Excel आ रहा है. Culture. XLRI का BCG, कल्चर बेमिसाल है. BCG pressure. It's a pressure. high pressure Okay. environment. Investors. No go. Okay, big no go. TV news channels. Circus. Journalism. Fundamental need. Fundamental need. Okay, that's nice.
Entrepreneurship. Passion. Passion. Dot. Love. Great. Thank you so much for doing this, Anugrah. This was really fun. And honestly, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है. Especially, you are creating a profitable startup, and that too within 6 months. So a lot to learn from your journey. And again, having that switch from BCG and leaving that life of comfort, I would say, to creating Dot, totally venturing into new unrelated field to your background, without having that mass communication or journalism background, and then doing this, it really means a lot. And I'm sure there have been a lot of ups and downs in your journey, but thank you for sharing that. We'll definitely take inspiration and insights out of it. And बहुत कुछ सीखने को है, and I hope audience को भी बहुत value मिले इससे. And we'll be in touch for sure, because मुझे भी बहुत कुछ सीखना भी आपसे इस journey में. Thank you, Ankit. You're too kind. And I had a great time on this podcast. You were a lovely host. Thank you. Thank you so much, Anugrah.